So our next topic is US healthcare overview. Okay. So what is US healthcare overview means like in medical coding we are not working for Indian healthcare. Okay. So medical coding जो है we are mostly like 90% of the time it is done only for United States of America. Okay. तो ये सब जो medical coding कर रहे हैं so it's mostly for American patients. Okay. Now what is the difference in like Indian healthcare and US healthcare? Okay, so India में like most of the patients or peoples don't have the health insurance. Okay, but US में ऐसा नहीं है. Like in US 95% peoples have the health insurance. Okay, India में it's less than 5% peoples. ठीक है, so there are a lot of differences between Indian healthcare and US healthcare. Okay, so for this almost like everyone is having health insurance, so how the government, how the health insurance companies manage that this much number of patients, like there will be more than like 30 crore of patients, like so how they will manage that data. Okay, so that's why the medical coding comes to the picture. It helps the government, it helps the patients, it helps the doctors, it helps the health insurance companies. Okay, so that's why the medical coding is used to gather the data from the patients. Okay, so first we'll understand revenue cycle management. Okay, so revenue cycle management is a term used for the health care programs operated in यूएसए. ठीक है, सो रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट मतलब क्या है, जो भी हॉस्पिटल्स है वो हॉस्पिटल्स का जो रिवेन्यू है मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स जो प्रोसेस होते हैं उसको मैनेज करना. ओके, ना उसमें मल्टीपल स्टेप्स है. सो फर्स्ट लाइक सच एज पेशेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब पेशेंट पहले रजिस्ट्रेशन करेगा हॉस्पिटल में के लिए फॉर द विजिट. देन उसका इंश्योरेंस वेरिफिकेशन होगा, प्रायर ऑथराइजेशन मीन्स उसका इंश्योरेंस चेक होगा. ओके, या और प्रायर ऑथराइजेशन में क्या होता है कि दे विल टेक द परमिशन फॉर द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और सर्जरी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी कि उसका वो क्लेम मिलेगा या नहीं. ओके, देन थर्ड स्टेप इज मेडिकल कोडिंग. So in medical coding, they will assign the codes for that particular diseases, surgeries, drugs, जो भी services हुआ है. ठीक है, उसके लिए they'll assign particular codes. देन उसके बाद वो क्लेम सबमिट होता है. अगर वो क्लेम डिनाई हो जाता है तो उसका है डिनाइल मैनेजमेंट, मतलब वो क्यों डिनाई हुआ है क्लेम, या कुछ गलत कोडिंग हुआ है या फिर गाइडलाइंस गलत है या फिर उसका क्लेम इंश्योरेंस में कवर नहीं है. ओके, सो ऑल दैट थिंग्स दे विल चेक इन द डिनाइल मैनेजमेंट. देन उसके बाद पेमेंट पोस्टिंग मतलब एक्चुअल पेमेंट होता है. देन नेक्स्ट इज मेडिकल बिलिंग, मतलब पेशेंट का और डॉक्टर का बिलिंग होता है यहाँ पे. एंड उसके बाद कलेक्शंस एंड ऑल. ओके, सो देयर लॉट ऑफ स्टेप्स इन द रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट. सो उसमें से हमें मोस्टली वी आर फोकस्ड ऑन मेडिकल कोडिंग. ओके, बट यू कैन ऑल्सो वर्क इन अदर स्पेशलिटीज एज वेल. So it depends on the company to company. Like koi companies they just do medical coding. Some companies do medical coding and medical billing, and big MNCs they do all of these procedures. Okay, they will do patient registration, prior authorization, coding, billing, submission, payment posting, collections, everything. They will provide end-to-end services to the US doctors. Okay, so यूएसए में जो डॉक्टर्स है अराउंड लाइक 30 to 40% डॉक्टर्स आर इंडियन बेस्ड. ओके, so so there will be a very much high chance like in future, like if you want to work in US, like if you get a visa and all, so and if you are CPC certified, it's very easy to get a job over there, like if you have all the backend requirements completed. Okay, so there are some terminologies in US healthcare. So these are, there are generally 2 to 3 types of visits. So first is inpatient visit. Okay, okay, so inpatient visit means like when the patient gets admitted to the hospital for more than 24 hours. Outpatient means he will be just seeing the physician in the OPD department, like outpatient department. Okay, and next is emergency department. Okay, so अगर कोई patient ambulance में आ रहा है like in the emergency department, that is a emergency department visit. Okay, so there are 3 different types of visits. Then there are 2 different types of US healthcare insurances. Okay, so one is federal insurance and one is commercial insurance. Okay, so federal insurance is again classified into Medicare and Medicaid,
and commercial is classified like based upon the that insurance company. Okay, so there are major companies in commercial insurance as well, such as Blue Cross, Blue Shield, and there are a lot of other companies. Okay, so what is this Medicare, Medicaid, फेडरल एंड कमर्शियल? ओके, सो फेडरल इंश्योरेंस मतलब क्या है कि जो यूएस में जो स्टेट्स है या फिर जो यूएस में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, वो पेशेंट्स को फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फेडरल गवर्नमेंट इंश्योरेंस. नाउ कमर्शियल इंश्योरेंस मीन्स पेशेंट खुद से खरीद रहे लाइक इंश्योरेंस कंपनी से, या फिर कोई पर्सन जॉब पे है तो उस पर्सन की जो कंपनी है स्पेसिफिक, दे आर गिविंग द हेल्थ इंश्योरेंस. Okay, so all these comes under the commercial health insurance. Next, like what is Medicare, what is Medicaid? Okay, so we will see in that detail. So again, it's offered by federal government, means central government of US to its citizens जो eligible patients है उनको. ठीक है. Now what is Medicare eligibility? So if any patient is above 65 years old या फिर उस पेशेंट को कुछ डिसेबिलिटी है, ठीक है, डिसेबिलिटी मीन्स उसको लाइक ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट टॉक, ही इज लाइक ब्लाइंड, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट को ईएसआरडी है. व्हाट इज ईएसआरडी? इट इज एंड स्टेज रिनल डिसीज, मीन्स पेशेंट लास्ट स्टेज पे किडनी डिसीज के. ओके, सो रिक्वायरिंग डायलिसिस, सो अगर कोई पेशेंट है उसको डायलिसिस की जरूरत है, सो ऑल दीज थ्री पेशेंट्स लाइक विल हैव द फ्री मेडिकेयर इंश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. ओके, नाउ मेडिकेयर में अलग अलग टाइप्स है, 4 टाइप्स है. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. ओके, मतलब क्या कि जो भी पेशेंट्स है उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है कि कौन से पेशेंट्स लाइक कौन से पार्ट में कवर होंगे. ओके, सो पार्ट ए कवर्स इन पेशेंट एडमिशंस, पार्ट बी कवर्स आउट पेशेंट कवरेज, पार्ट डी कवर्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब कोई पेशेंट है उसको अगर थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, सो डेली ही विल टेक द थायराइड टैबलेट्स. अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डेली ही विल टेक द मेडिकेशन, या फिर डायबिटीज है, सो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पे पार्ट डी में कवर हो जाता है. एंड पार्ट सी इज वेयर दैट पेशेंट विल गेट all these three coverage: inpatient, outpatient, and prescription drugs. Okay, now next is Medicaid. Now Medicaid is given by federal and state. Okay, so अगर कोई पेशेंट किसी स्पेसिफिक स्टेट में, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, टेक्सास, so in that state and the central government will give this Medicaid insurance. नाउ इसका एलिजिबिलिटी क्या है कि दोज सिटीजन्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन और प्रेग्नेंट वुमेन्स और द बिलो पॉवर्टी लाइन चिल्ड्रंस, सो जो इकोनॉमिकली नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग पीपल है, या फिर दे आर लाइक होमलेस पीपल्स, और दे आर not having their own house, they are not able to get proper job and money, so they will get this free Medicaid insurance. ठीक है. Then there is one very important law in USA. Okay, so India में like we don't have that much security for the health information, like we disclose कि इस patient को ये हुआ है, that patient is having that disease, this patient is taking this medication, but in US it's not like that. ठीक है, US में all this data is a confidential. Okay, so this is called as a PHI, that is protected health information. So without the patient's permission, the doctors or anyone cannot disclose the patient health information. Okay, such as उसका फ़ोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, या फिर उसका ईमेल आईडी, एड्रेस, या फिर वो कौन से मेडिकेशंस ले रहा है, वो कौन से डिसीजेस है उसको. Okay, even sometimes even the family members also cannot access this health information without the patient permission. Okay, so that is protected health information. Okay, उसके लिए एक एक्ट है, that is HIPAA policy, that is Health Insurance Portability and Accountability Act. Okay, this is very serious and this is very secured. Okay, act based upon to secure the healthcare information. Okay, so in medical coding there are mostly 3-4 types of books that are generally used. So first is ICD-10 CM. Okay, so it is International Classification of Diseases, 10th revision, clinical modification.
Second is ICD-10 PCS. It is for the procedural coding system. ये generally IPDRG कोडिंग में यूज होता है. 10 CM जनरली यूज होता है HCC कोडिंग में. देन देर इज अ CPT दैट इज करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी. सो वो जनरली होता है इन ऑल द सर्जरीज. ओके, एनास्थेशिया, इवेल्यूशन मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. And then there is a HCPCS, healthcare common procedure coding system. So that is generally used for the DME billings and all equipments and everything. ठीक है. So these are the books like ICD-10 CM, PCS, CPT, HCPCS. There is one more edition of ICD-10 CM. So ICD-10 CM is universally acceptable, means all the countries in the world use this ICD-10 CM because it is developed by World Health Organization, WHO. Okay, there is one another version that is ICD-10 AM. Okay, so that is Australian modification. So that is only used in Australia. Okay, so these are the books that we will use in the CPC exams as well. Okay, so जो भी medical coding exams होते हैं उसमें ये books use करते हैं. Okay, so thank you for this. We'll go to the next session.